Hello, am I audible? Hello, Yes. आ रही सर. आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है. ओके. सो हेलो गाइस, मेरा आज वेबिनार है. मैं आज साइबर सिक्योरिटी इन क्लाउड प्रोटेक्टिंग योर डेटा ऑन द गो एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑल अबाउट द क्लाउड. आपको क्लाउड के बारे में कुछ पता भी ना हो तो ये वेबिनार देख लीजिए और पूरा क्लाउड का बेसिक स्टार्ट होगा यहाँ से. So, who am I? I am Aditya, the cloud and cybersecurity enthusiast. I am a software undergrad. I am certified in Oracle Cloud Infrastructure. I am a cloud architect, multi-cloud architect associate, and OCI data science professional. And I'm also intern at Forensic Academy. So, हम क्या सीख रहे हैं आज? What we are going to learn in this webinar? Cloud and cybersecurity. What we are going to learn in cloud? What is cloud? Cloud service model, foundations of cloud computing, and why we should use the cloud. And we are going to implement cybersecurity in cloud, like how we should protect our data, like customer data, all in the cloud. And it's going to be beginner friendly. So wrap your seats to get started in cloud. So cloud क्या है? What is cloud computing? आप सब ने तो गेमिंग पीसी बिल्ड किया ही होगा. उसको क्या क्या लगता है? रैम लगता है, ग्राफिक कार्ड, और क्या केस लगता है, सीपीयू बिल्ड करने के लिए फ्रेम लगता है, और स्टोरेज, रैम, एसएसडी, एचएसडी सब लगता है. सब हार्डवेयर होते हैं. हमको वो कंबाइन करके बिल्ड करना होता है. उसको Aditya, I डिफिकल्ट है. think your screen is, it's stuck right now, I think. Wait Yes, a now minute. it's okay. Yeah, now it's okay. And make it full screen. Yes. Is it visible, sir? Yes, yes, now it's visible, but make it full screen. So it's a full screen, sir. It is full screen. Uh, in slideshow, you can do slideshow. सर अब Yeah, it's okay. Go on. आपने तो गेमिंग पीसी बिल्ड किया ही होगा. सेम वर्चुअली हम गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं क्लाउड में. क्यों बिल्ड करते हैं? हमारे वेब सर्वर्स और कुछ डेटाबेसेस को स्पैन करने के लिए हम वर्चुअली गेमिंग पीसीस, लाइक सिमिलर टू गेमिंग पीसीस, वी बिल्ड कंप्यूट इंजिन्स. कंप्यूट इंजन का मतलब है सेम एज पीसी. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड a compute engine. Okay. And what is cloud computing? Imagine a big fluffy white cloud, but instead of RAID, it holds all your files, photos, and apps. That's the cloud, a network of computers storing and accessing data over the network. Like you can access your resources over the internet instead of your physical device. You don't need to purchase all the physical hardware. You can just go on the cloud and span your PCs. So what are the basics of cloud? You need to know what are the basics. Like there are different types of clouds, like public cloud, hybrid cloud, and private cloud. Even if you are starting a startup, or if you are planning to like come up with an organization you are building, so you have to implement cloud right there. You cannot go and buy physical hardware servers. It can cost you about 50 lakhs to 1 crore if you want to have a physical hardwares and servers. But if you go on cloud, you can it is easy because it is a pay as you go service. You only pay for what you are using. आपको कुछ ज़्यादा नहीं पे करना है, मतलब सिर्फ आपको जो यूज़ कर रहे हैं वही पे करना है. फिजिकल हार्डवेयर का कॉस्ट ज़्यादा होता है. और इसमें डिफरेंट टाइप्स है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड ऑप्शंस. उसको आपको ऑन व्हाट बेसिस योर बिजनेस इज इम्प्लीमेंटिंग, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू दैट टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक Hello, hello, मतलब. hello, Aditya, Aditya. I हाँ think सर. your slide is still, stuck right now. So just try to do it manually with the mouse. ठीक है ना? हाँ सर, ओके सर, देखता हूँ. सर कहाँ है सर? सर इज इट विजिबल राइट नाउ, लाइक पब्लिक Yeah, yeah. क्लाउड? Now it is visible, but वो बीच में stuck हो रहा है. सर मैं ऐसा ही चला लेता हूँ, Okay, कुछ नहीं okay. होगा. ओके सर. So what is public cloud? Like the name suggests, like public. You all have used it like public buses, right? आपको public transport में
यूज़ किया ही होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। आप क्या करते हैं वहाँ पे, आप पूरा बस तो नहीं ले सकते हैं, मतलब आपको प्राइवेटली लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, बाजू वाले के पास बैठते हैं अगर सीट खाली हो तो। You share your seats with another person you don't know. He's a stranger to you. Like that, it is similar to this because I want to show the picture of how the data centers will be, right? Wait. हाँ, ये देखो यही है. This is the data center of. This is the official photo of the data center of Google's. Like you can see, there are multiple server racks here. In public cloud, what you will do is take this take this server track, and you are going to share the resources with another organization. But is don't know with मतलब आपको पता नहीं कि वो कौन है, आप सिर्फ शेयर करते हैं उसके पास. वेट अ मिनट. हाँ, shared infrastructure and resources with other organization. मतलब you are sharing your infrastructure with another organization, but your infrastructure and that guy's infrastructure is isolated with each other. मतलब आपको पता नहीं कि मतलब isolated होता है, मतलब share करते हैं सिर्फ. मतलब and this is highly scalable, cost effective. मतलब it is like cheap, it's same as a public transport, and security and data control need to be considered because in public cloud the security and data control like not so good, but you have expertise in that to make sure the data is secure. Next, what is private cloud? Private cloud is similar to having your own jet or having your own bus. You own all the infrastructure and resources for your particular organization only, and you can manage the security and customization of your own. And but it caused highly and management complexity because you are is like buying your own infrastructure in cloud, but it is dedicated only to you, and the infrastructure what you are buying is not shared with another organizations. Okay. Next is hybrid cloud. It's like using public and private cloud deployments. Like हमको क्यों यूज करना है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों? यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट देखते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं. जो रिसोर्सेस पब्लिक क्लाउड में है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है, और प्राइवेट क्लाउड में हम डेटा रखते हैं क्योंकि इट इज़ लाइक मोर सिक्योर. So in order to combine these and make it cost optimized, we use hybrid cloud, and it is flexible and optimization for specific need, requires integration and security management effort. मतलब security का कुछ expertise होनी चाहिए क्योंकि we are managing both public and private cloud. What's the difference between traditional IT stack and cloud IT stack? ट्रेडिशनल आईटी स्टैक में क्या होता है, आपको ज़्यादातर हाईली एक्सपेंसिव होता है, और क्लाउड में चीप होता है. मतलब एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इट्स अफोर्डेबल. You can see here applications, data, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, and networking. You have to manage all these on your own and purchasing all the required resources, infrastructure for your company. But in cloud, you have three service models: IaaS, PaaS, and SaaS. Like in IaaS, it's like infrastructure as a service. Infrastructure का मतलब क्या है? Hardware. एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, लाइक प्लेटफॉर्म का मतलब समझो कि वीएस कोड में क्या होता है, आपको फुल कोडिंग का जो मटेरियल्स चाहिए, मतलब जो एक्सटेंशंस चाहिए, वो सब दिया जाता है क्योंकि आपको कोड करना ईजी हो. इट इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स इन क्लाउड. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये समझो कि नेटफ्लिक्स, ओला, उबर वो एप्लीकेशंस है, और वो एप्लीकेशन से आप सर्विस मांग रहे हैं, इसलिए हमको वो क्या बोलते हैं, सैस बोलते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है. ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये सब आयास कहते हैं. और पैस में जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, क्या चाहिए, रन टाइम चाहिए, वो मिडलवेयर का मतलब कंपाइलर्स चाहिए, ओएस चाहिए ना, वो डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी ओएस चाहिए वो आपको चूज करना पड़ता है. और ये सब होने के बाद आपको क्लाउड से सॉफ्टवेयर मांगना है. क्या होता है, एप्लीकेशन मांगना और डेटा क्यों मांगते हैं? In order to use the software, you have to provide some data, and in return the application will return some data. It is as so these are the three service models.
and I'm going to give some examples so you can get easy understanding. So here, SaaS क्या होता है? नेटफ्लिक्स में जो बोला था सेम ही है। और एक्सेस क्या है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड से एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल और ऑनलाइन गेम्स, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। जो आपके मोबाइल में ऐप्स है, वो सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर वो ऐप क्लाउड में है, आप यहाँ इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है? और बिल्डिंग योर ओन ऐप स्टोर, मतलब आपका ऐप स्टोर बिल्ड करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए और टूल्स चाहिए, डेवलप, डिप्लॉय एंड मैनेज योर एप्लीकेशंस, वो क्लाउड में देता है। उसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं। और नेक्स्ट IaaS। IaaS क्या होता है? आपको मतलब वर्चुअल कंप्यूटर को रेंट करना है। हाँ, कहाँ? क्लाउड में। क्या क्या होता है IaaS में? वर्चुअल सर्वर्स होता है, स्टोरेज होता है और नेटवर्किंग रिसोर्सेस होता है। और यू कैन मैनेज और बिल्ड योर ओन IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड। नेक्स्ट, सो ये रीजन्स एंड जोन्स ये GCP में होता है। लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग इन गूगल क्लाउड, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रीजन्स एंड व्हाट इज जोन्स। रीजन का मतलब ये समझो कि कॉन्टिनेंट है, ओके। जोन का मतलब ये समझो कि सिटी है। और रीजन कहाँ होता है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में क्या होता है? फिजिकल लोकेशन, इट इज ए फिजिकल लोकेशन, कहाँ डेटा सेंटर्स होता है वो। और इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी जोन्स होता है। अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब वहाँ पे डेटा सेंटर्स ज़्यादा होती है, नंबर्स ऑफ डेटा सेंटर्स विल बी मोर, एंड देर विल बी ए सीमलेस कनेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विथ योर इंटरनेट। और लेटेंसी भी कम होती है वहाँ पे। और क्या? डिज़ास्टर रिकवरी होती है, नेटवर्क लेटेंसी कम होती है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, अगर आपका कंपनी का डेटा इंडिया में ही रहना तो ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होता है। इट इज़ लाइक इफ द डेटा हैव टू बी स्टोर्ड इन दिस कंट्री, सो यू हैव टू compliance to the government. So in order to make sure that you are storing the data in the Indian region, like means Asia, in Asian region, in Asian continent, sorry. And the zones is like एक रीजन में 3 से 4 जोन्स होती हैं गूगल क्लाउड में। और ये क्या होता है? जोन ए स्पेसिफिक डेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? हम लाइक नंबर ऑफ जोन्स को कंबाइन करके रीजन बोलते हैं। और जोन्स इज लाइक स्पेसिफिक डेटा सेंटर्स विद इन ए रीजन। इट्स लाइक ए होटल इन ए चूजन सिटी। और स्पेसिफिक सेम है, डेटा सेंटर में क्या क्या होता है वही ऑफर करता है जोन भी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ देखो, यहाँ पे यू कैन सी व्हाट आर द रीजन्स एंड जोन्स, और लाइक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे एशिया में कुछ है, यहाँ पे यूरोप में भी कुछ है, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Aditya, हाँ, हेलो। हाँ, can कमल। you explain the region again? ओके। हाँ, regions, it's like a physical location of your cloud resources, and it's like a data centers, network infrastructure and availability zone. Regions का मतलब क्या होता है ना, वो क्या, it's like a physical location in a continent, just like a continent. Take an example of Asia, okay. It is Okay. the word Asia means region, and under Asia there are different zones, like Asia 1, Asia 2, Asia 3. There are zones, these are zones. Only the Asia, the word I am saying, it is like a region. You just name the physical location by giving it as a region, that's it. Okay, the country and the states. It's an Yeah, it's but okay. only continent, not a country, it's like a continent, that's it. Okay. Or these are the pictures where I mean points where the data center is located around the globe, and these belongs to Google Cloud. Yeah. And choosing the right cloud services for you. हाउ डू यू चूज क्लाउड सर्विस? ये समझो कि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और यू नीड सर्वर्स लाइक वर्चुअल सर्वर्स टू हैंडल द ट्रैफिक यू आर गेटिंग इन योर वेबसाइट, राइट? In order to make sure that possible and seamless service for your customers, you have to you have to choose a right cloud service for you, so it can optimize your cost and enhance your profit capabilities on your business. So क्या होना चाहिए? बजट देखना चाहिए, कितना बजट है आपके पास क्लाउड में बिजनेस चलाने के लिए। और टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्लाउड आर्किटेक्ट को चूज करना है,
और नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर सबको देखना है, क्योंकि एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे ओनली प्रोवाइड द सर्विस, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट is known for the technical expertise personals. So you need to choose technical expertise personnel in order to implement these cloud services. Scalability. Why do you choose cloud service? Because in a hardware, if you have to increase the capabilities in order to enhance the traffic, in order to satisfy your customers, you have to take down the physical hardware, and that may cause your customers to dissatisfy from your service. मतलब ये समझो कि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो सर्विस कहाँ से दे रहे हैं? ये फिजिकल हार्डवेयर से दे रहे हैं, और एक टाइम में क्या होता है, आपको वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, और क्या करते हैं आप, उस फिजिकल हार्डवेयर को निकाल के मतलब कुछ अपडेट करके डालना पड़ता है, क्योंकि उस ट्रैफिक को एनालाइज और मतलब एनहांस करने के लिए, in order to make sure your customers get utmost service. But in cloud, it's like if in your fingertip, just make sure how much cost you are having, and click the button, and your website servers and databases will scale up and scale down as you need. And you can also implement auto scale. जब आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़िया ज़्यादा आ रहा है, ऑटो स्केल रखिए। जब क्या होता है, आपका सर्वर्स ऑटो स्केल होता है, और you can manage your own manually. But if you don't have technical expertise, you can just put it to auto scale. And security, cloud service providers utmost security देते हैं, और we can see in the next slide, there are 6 layers of security that are provided for your data in cloud. Next. Okay, so till now we have seen like basics of cloud. We have seen what is cloud computing. If anybody has some doubts, I can clarify. Doubts है किसी के पास? Hello. Okay. Then I'm going to give an introduction to Google Cloud and how we just explore the Google Cloud. Okay. I'm going to share the screen. Wait a minute. So you cloud account, right? Anyone? It is visible. Yes, yes, it's visible. Okay. 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 Wait a minute. Yeah, so this is my student account. As you can see here, my email ID is there, and you can
add your own account if you have a like billing account something, but it is pre-made account which the Google Cloud is providing me to study only. So I want to make sure you are user friendly with this, so I'm going to explain what all these in a few minutes. Okay, so it is my account, you can see the account details. Okay, and these are like if you have any cloud partners like cloud third party cloud service providers, you can check here, and it is a project settings. Okay, you can see a project name, you can name it, it is not like you don't, it shouldn't be like a unique name. You can repeat the name as you wish, but the project ID, it's unique, and project number is also unique. Project name is not unique. Okay, okay, so you can see here what are the services are provided by the Google Cloud: API and service, IAM and admin, billing, compute engine, cloud storage, BigQuery, VPC, and Kubernetes. There are almost 255 services offered by GCP. You can choose according to your own, and I'm going to spin up a web server so you can understand how easy it is to spin up a web server in the cloud. You don't need to be a technical expertise to make your own server. So all you have to just, if you have a laptop in your with you, just follow me along, and I will show you how easy it is to spin up a web server in cloud. You just have to click here compute engine. Compute engine का मतलब ये समझो, create instance. So you can see here, the Google Cloud is offering me some tutorials to follow along, but I don't need it. Okay, so it's showing me like monthly मुझे $25 चाहिए अगर मैं कुछ ये कर रहा हूँ, मतलब एक गेमिंग पीसी बना रहा हूँ तो $25 चाहिए. सो आई एम गोइंग टू नेम इट एज ब्लू. We are going to issue some security rules for it. So I'm going to spin up at 2 servers and at 1 test server. So checking the connectivity with one server, having a firewall rule, and checking the connectivity with another server which doesn't have a firewall rule. So we are checking the security of Google Cloud here. Okay, so we are seeing here US East 1 and US East C. So मैं आपको रीजन और जोन का डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे. ये देखो, दिस इज द स्पेशल रीजन. यू आर सीइंग लो CO2, राइट. यहाँ पे लो CO2 का मतलब क्या होता है? ये गूगल क्लाउड का डेटा सेंटर्स जो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बन रहे हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं. दीज आर मतलब रिसाइकल्ड एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से ये चल रहे हैं. मतलब द ग्रीन लीव्स यार यू आर रिप्रेजेंटिंग, राइट. दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी. और US ईस्ट 4 इज लाइक कॉन्टिनेंट. ये देखो कॉन्टिनेंट समझो, ये US ईस्ट 1, ईस्ट 4, ईस्ट 5. ये US का मतलब है US कंट्री, और ईस्ट 1 का मतलब वो कुछ रीजन है. ओके, और जोन, ईयर वी आर सीइंग लाइक US ईस्ट 1. ईस्ट 1 के बाद अल्फाबेट डाल दो, जोन हो जाएगा. सिर्फ ABC है, ABCD, सिर्फ BCD है. ओके, और यू कैन सी एक रीजन में 3 जोन है, पर एक स्पेशल रीजन है. ओके, US सेंट्रल 1, इसमें कितना है? 4 है. देखो, सिर्फ एक ही रीजन में 4 जोन है. दिस इज स्पेशल. सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द US ईस्ट 1. ओके, वेट अ मिनट. Is my okay US East 1 and US East 1 C. ओके, हाँ, दिस इज लाइक कॉन्फ़िगरेशन. आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? जनरल पर्पस के चाहिए, जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, और जीपीयूज का मतलब ग्राफिक कार्ड. मतलब आपको गेमिंग पीसी जैसे बनाना हो तो जीपीयू यूज कर सकते हैं. कंप्यूट ऑप्टिमाइज है तो आपको कुछ डेटा एनालिसिस करना है तो कंप्यूट यूज कर सकते हैं. मेमोरी ऑप्टिमाइज है तो आपको डेटाबेसेस बनाना है
डेटाबेस सर्वर बनाना है तो इसको यूज कर सकते हैं। और जीपीयू कहाँ यूज करते हैं का मतलब एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जीपीयू यूज करते हैं। और these are like series. I suggest you to go through the Google Docs like in order to study these, but in general purpose E2 आता है, सिर्फ जो सीरीज यहाँ दिया है वो सिर्फ E2 में आता है। And I want to give like okay yeah we see this is like preset, and you can customize your own web server on your basis, on your use needs. E2 medium 2V CPU, 2V CPU मतलब 2 वर्चुअल CPU, एक कोर और 4 GB मेमोरी मिल रही है। और नेक्स्ट ये स्टैंडर्ड है, इस आपको आपको रहने ना मतलब एज इट इज डिफॉल्ट रहने दो। और नेक्स्ट हम सीधा यू कैन सी फायरवॉल, we are not configuring firewall right now, we just create it. So it can take around 30 seconds or 40 seconds to create a compute engine. So at that time we can go create another compute engine. So we are going to name this as green. Will it be this like US East 1C? US East 1C and same we are going to let this same all the same. Okay, we're just going to create this. So the first server which I have created is already finished, and we are going to connect. SSH is to connect the remote server. हम यहाँ पे वेब सर्वर बना रहे हैं ना, हम एक HTML पेज बनाते हैं एक सर्वर में, और हमको दूसरी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। Okay. We're just going to update this and sudo apt get install nginx lite. So in order to start a web server, we are going to use nginx. Yes. सो हमारा वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन सब हो गया। अब क्या करते हैं, हम HTML पेज को ऑल्टर करते हैं, क्योंकि हमको दिखना है ना कौन सी सर्वर है। Aditya, I guess the screen has been stuck. Okay, wait a minute. Can't you able to see my screen? Okay, it is struck. Can't I share that? So okay, currently I'm not sharing this. Okay, wait a minute. Okay, SSH. Okay, you can see the SSH of this server. This is from a blue server. Okay, server blue, the one which I named blue, right, while in creating the server in GCP. So what I have done, I have updated this Linux, and I installed nginx lite in order to save the time of downloading huge versions, and that's it. I have created this, and we are going to configure the HTML file so I could identify easily what servers it is. Okay, just make it full screen. Okay. So you can see the right font, change directory. Yes. Wait a minute.
var. So I am in HTML, so I could change the HTML file. So what I have to do is sudo chmod 777 like index.html. So in GCP, you can't edit the index.html file without granting the permission. So I have given the permission to edit this file. So I'm going to edit this file. So I'm going to change welcome to Nginx to welcome to Blue. Okay. If you have to exit this, just press Ctrl O, enter, Ctrl X, that's it. And I will just exit this. Just put the exit command, it will get exited. Okay. Then we are going again to this. Where is that? Okay. So we are back and we are back to green server, and we are following the same steps as we done in the blue server. हम जो steps वहाँ किए हैं blue server में, हम यही follow करेंगे green server में. ऐसे search करेंगे. रुको मैं यहाँ पे screen share कर देता हूँ. Where is my stop presenting and SSH share. At the initial we have to authorize. So we are again here and we have to update. And it gets updated, and we have to install Nginx in order to make it a web server. Okay, then we have change directory where the HTML file is. So we are back again here, and I just have to do the permission. Sudo chmod 777 file name. We are done, and just we have to edit the file. What we are naming here, welcome to green server. Ctrl O, enter, Ctrl X, done, exit. So we have configured both the servers, and all we have to just do is like you can copy this IP address and paste here. Terminate. You guys able to see the screen which I am opening right now in another tab? Okay, you can see. So we have created the two servers with green and blue. The both names are different. Okay. Next, we have to create a firewall rule on what server we are going to get access on. So we are going to change that. So we can't access this website right now. So I'm going to, in order to set a firewall rule, where we should go, like you have to go here, like VPC network,
and you can see the firewall. Okay, just click the firewall. It could take some time. So, okay, create firewall rule. Okay, we are going to give a like allo HTTP. No, I will just give a web server. Web server, okay, and allow ingress, and allow ingress and egress means incoming traffic and egress means outgoing traffic. We are going to the that website and that is called incoming traffic. The website is receiving traffic from our side, so we are allowing this traffic, and we are going to allow this, and we are going to give a specific tag. Okay, wait a minute, just go compute engine. I just forgot to give a tag for this. I'm just going to give a tag here. Click on blue and edit. Okay, edit and go to network tags. We are going to give it as a web server. So why we use tags? In order to identify uniquely in the network. So save. So we are done here, and going back to VPC network. So here it is the VPC network, and we have to configure the firewall for that server. हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे? ये देखो, I want to show you one thing. See, you are seeing default right here, default. It is a default subnet assigned by Google, and you can see around 29 subnets are there. What does the 29 number means? It like it has created subnet in every region the Google has. So we have around 29 subnets default, and it has a firewall rule of 4. That is common. It is a default settings given by Google Cloud, and we are going to change that to our new. Only we are going to change the firewall, not the VPC network. We are not going to create a VPC network and create a firewall rule, and we are going to name it as allo HTTP, and default network we are going to giving the traffic to that website, and we are going to specify the target tags. We have created the two servers, blue and green, and we are applying firewall rule for only one server, that is for only blue server. So we are going to give the tag of the blue server, and it is like IPv4, only IPv4, and we are going to access from internet. So we are going to assign 0.0. What does this mean? I mean this like the zeros in the IP address. It means allowing all the IP addresses, and we are going to specify the port, and we are using HTTP, right? That means 80 port 80, and create. That's it. We have created a firewall rule for the server called blue. हमने एक सर्वर बनाई, दो सर्वर बनाई, ब्लू और ग्रीन, और एक को फायरवॉल रूल दिए और दूसरे को नहीं दिए. और इसको कहाँ कैसे टेस्ट करेंगे? हम एक और सर्वर बनाएंगे, टेस्ट सर्वर, और वहां से हम टेस्ट करेंगे ये कैसा चल रहा है कि नहीं, फायरवॉल रूल अप्लाई हुआ कि नहीं, हम वहां से चेक करेंगे. फिर से जाएंगे और क्या करेंगे, कंप्यूट इंजन में जाएंगे, और नया वाला इंस्टेंस क्रिएट करेंगे. So if you have to like spin up 100 like VM instances, you can't create like using mouse. आपको 100 मतलब वर्चुअल मशीन्स को स्पिन अप करना है तो माउस से नहीं कर सकते. आपको क्या यूज करना है? IAC यूज करना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड. वो क्या बोलते हैं? टेराफॉर्म बोलते हैं उसको. हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं. ओके,
like okay. Okay, we are going to use a IAC Terraform code in order to spin up a virtual machine. Not we are not going to use a like like in a pinpoint mode. We are not going to use a mouse in order to create one. And I'm going to explain what this means. हम कैसे create करते हैं code से. And this method is used in all the organization like big companies. They, in order to have a several number of virtual machines, we are going to use this method. So in order to learn cloud computing, you have to learn Terraform, means infrastructure as a code tool in order to spin up several number of virtual machines in a minute or in a minute or two. It's taking some time. So I have assigned a firewall rule for this, right? Bluker. Let's test it. So what I'm going to do is like copy this and just paste here. Let's see what it shows. Not this. Okay, wait. Oh, it's not going to accept. We are going to spin up this in order to test that. Why it is taking so much time? चलो हम यहाँ से ही कर लेते हैं. What we are going to name this as test VM. एक मिनट. Oh, let that loads. I can see what's going on here. I guess internet connection. Okay, it's not active. एक मिनट में आपको आयाक कोड दिखाना चाहता हूँ. वो कोड से कैसे वीएम इंस्टेंस को स्पिन अप करते हैं. I don't know why it's taking so much time. I guess what's the problem?
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो Yes, 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 yes. sorry for the interruption, sorry. Okay, so I'm going to create here like test VM. सेम सेम सब सेम रखते हैं, कुछ नहीं, और जस्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट, दैट्स इट। और हो गया हमारा VM सब क्रिएट हो गया। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, SSH करके देखते हैं क्या हुआ है। A minute to spin up. So it's like creating. Okay, it's done. So let's see what's in here. Price. Wait a minute, I'll just make sure all the firewall rule is applicable to this, and I'm going to share the screen of the VM. Where is that? Okay, here. Okay, I'm going to share the screen of the test VM's SSH. Window SSH share. So all you can see the VM that we created, like test VM, and we are going to update this also. Sudo. Oh, it is not typing. Okay. क्या हो गया भाई? It's not taking my user inputs. Okay, wait a minute, I'll just make sure again. So I need to get access again. एक्चुअली मेरा अकाउंट चला गया, वो मैं अब सिंपल सा बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं और फायरवॉल रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अरे क्या दिखा रहा है ये?
Okay, and continue. And VM instances. अरे 1 मिनट हो गया window console share dashboard. So wait a minute, just make sure all the get updated. Okay, we have created now. So as you can see, I have logged in successfully right now. I don't know what happened. Okay, so you can also spin up the what you say the VM instances with the piece of code. So I'm going to show the code also. Wait a minute, just make sure the code is well done. Okay. Okay. Here's the code: Google Cloud Compute Instance create test VM. This is the name of the VM instances, and the machine type is E2 medium subnet default. And the way it is creating in zone US Central 1B, and it just creates. Okay, authorize. Okay, done. And SSH. Authorize. Okay, as you can see, it has created a VM instances, and I just have to refresh the screen. Okay, just refresh it, and I can get the. See, it has already created another VM instance that I have mentioned in the code. Okay, and just make sure. Okay, wait. I'll just present the screen of that SSH. Okay, you can see the SSH, right? So I will just sudo apt get install nginx. So done. We have created web server. Exit,
and I'm going to share that. So as you can see, I have created all the requirements for this, and I just need to create this IP address. And that's it. We have created a web server right now in Google Cloud, and you can change this HTML page of your website, and just you can deploy your web on this. और क्या करना है अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना, लाइक नेटवर्किंग, VPC नेटवर्क, एंड यू कैन सी ब्रिंग योर ओन IP. मतलब आपको कुछ IP चाहिए, वो रिजर्व्ड है, स्टैटिक IP एड्रेस, यू कैन make sure you can use that, and if you bring your own domain you can also use that. And I'll make sure I'm going to add a firewall rule so that I can't access it. मैं firewall rule डाल रहा हूँ, allow HTTP है, मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ, जो भी ट्रैफिक आएगा वो सब नहीं होगा. अब VPC नेटवर्क में जाना है, firewall रूल में जाना है, firewall में, और क्रिएट योर वो firewall रूल बनाना है. रूल कैसे बनाते हैं, क्रिएट firewall रूल और नेम कुछ भी डाल दो, डेमो, और ये सब रखना वैसे ही सेम इंग्रेस, एंड एक्शन डिनाई रखना. डिनाई कहाँ, और हमने तो ऑल इंस्टेंसेस, एक ही 2 इंस्टेंसेस है, हम और उस पर भी डाल रहे हैं. और नेक्स्ट सोर्स IP एड्रेस कहाँ, इंटरनेट से कोई भी नहीं देख सकता वो वेबसाइट. ओके, नेक्स्ट TCP और पोर्ट इज 80. क्रिएट, इट्स क्रिएटिंग. अब मैंने क्या डाला है, फायरवॉल रूल, इंटरनेट से उस वेबसाइट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वैसे बनाई है मैंने. अब कहाँ जाते हैं, कंप्यूट इंजन और VM इंस्टेंसेस, अपडेट करते हैं, रिफ्रेश हो गया, अपडेट हो गया. अब क्या करते हैं, फिर से एक्सेस करते हैं. we can see is there any HTML page, so we can access, because I have applied a firewall rule so that no one can access this website from internet. देखो टाइम ले रहा है, सब HTTP रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहा है फायरवॉल. इंटरनेट अच्छा है, मैं देखो हो गया, फायरवॉल रूल अप्लाई हो गया. अब ये देखो, मतलब इसको भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ओके, in this way you can apply and create a web server and implement the firewall rule for your own website and organization. And next I'm going to share. Okay, So if you have any questions, you can ask. Okay. You can ask if you have any questions. Any questions, guys? Yes. Any questions? कुछ पूछो, मैं आंसर कर सकता हूँ. If you What is the firewalls? Firewalls is like a bodyguards. मतलब ये समझो कि वो क्या पब्स और में पब्स के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते हैं ना, आपके पास आईडी कार्ड है, पास है तो अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं. फायरवॉल भी ऐसे ही करेगा. सेट ऑफ रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन फायरवॉल, we can implement that. Yeah, it's like it's not like a presence cell, it's like a gateway in order to access some resources from internet. Next question. You can ask questions if you have. चैट में पूछो, कोई बात नहीं, माइक तो ऑन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. चैट में पूछो. If you have any questions, you can ask.
हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, जो एक्सेस था इंटरनेट से उसको हम डिनाई कर दिए, मतलब उसका आइडेंटिटी हमने ब्लॉक कर दिए, इसलिए वो क्या कर रहा है, फायरवॉल डिनाई कर रहा है HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम वेबसाइट, मतलब इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं क्वेश्चंस नहीं? सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको पहले क्लाउड सीखना है। पहले क्लाउड सर्विसेज क्या होते हैं आपको, at most like you have to know around 50 to 60 services, and you have to build some projects, and then you can go on a roadmap. You can explore the Google Cloud skill boost. I'll just give you the website. Control. Google Cloud Skill Boost. Okay, you can go here and you can get a roadmap how to become a cloud security expert. Like there is a roadmap and some of the hands-on practice, and you have to subscribe for Quick Labs in order to get a free cloud account, so you can practice on your own. Quick Labs. You can just search on Google like Quick Labs Arcade. Can tell some project example, like project कैसे बनाओगे, projects ऐसे बनाओ कि like cloud resume, and you have to implement like CI/CD pipelines, and you have to build a React project like front end, and in that front end you have to showcase your resume and you should deploy in cloud. मैं तो इजी से बना दिया, वो क्या वेब सर्वर बना दिया, Nginx को इंस्टॉल कर दिए, और उसमें एक HTML डिफॉल्ट फाइल होता है, उसको आप एडिट करके क्या कर सकते हैं, आपका रेज्यूम डाल सकते हैं और उसको होस्ट कर सकते हैं, और उसको और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो CI/CD DevOps इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इट कैन बी इजी, इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। जितना कॉम्प्लेक्स आपका प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस। और क्वेश्चंस, यहाँ से क्विक लैब से आपको फ्री क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो $300 का फ्री देते हैं गूगल क्लाउड, you can make use of that. And if you don't have any credit card or debit card like me, and you can go to Quick Labs Arcade, you can subscribe to them and they will send you a subscription code to your email ID, and you can use that on Cloud Skill Boost account. And there it has a more courses and it has hands-on labs, so you can practice. Next question, कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट Hi डाउट है तो Aditya. पूछो। From a security perspective, what are the challenges that the businesses face when migrating to a new cloud? What are the challenges? Okay, I will just explain what you are. What are the challenges? Okay. As per the cloud, there is like data security, because by storing it in cloud, you are making more vulnerable to the hackers or attackers, because attackers can target one system, but it is interconnected in cloud with another organization VM instances. It can be like more vulnerable to if one system gets hacked and all the other systems in the network or the cloud data center will get hacked, and it is like a more difficult part to manage. But the cloud has a 6 layers of security, and the securities, I mean, like they have the security in data center and in network also. And the first layer of security, I mean security parameter, like the data center is covered with a barbed wire and security cameras and secure lobby. And it has a secure lobby means only authorized personals are allowed in data centers. And the next layer is a security facility, where like a secure building, and all the secure, like we can see the police are patrolling in our city at the night time, and it is similar to that, where the security teams patrol and monitor the access, monitor the data center on all the times, and keep guard on the data center values and data. And next is network security like firewalls होते हैं और intrusion detection systems होती है, और मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब फुल डे टू नाइट मॉनिटर करते हैं डेटा ब्रीचेस को अवॉइड करने के लिए, और अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं,
और बहुत है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी है, वो मतलब इम्प्लीमेंट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में। और 5th और 6th लेयर होती है सर्वर हार्ड ड्राइव्स। मतलब जो हार्ड ड्राइव्स हम वो क्या इट्स लाइक डेटा सेंटर में बहुत इट्स लाइक इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ग्राफिक कार्ड है ना, बहुत हीट जनरेट होती है। और कुछ हार्ड ड्राइव्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं उस टाइम में। और उसको मतलब रिन्यू करने के लिए हमें वो क्या करती है, आपको खुद ये सब करना नहीं पड़ता, गूगल क्लाउड मैनेज कर सकती हैं। और 6 लेयर वो होती है मतलब सिक्योर हार्ड ड्राइव डिस्ट्रक्शन। जो हार्ड ड्राइव्स इज लाइक डैमेज्ड, they just don't throw it away, they just melt down the hard drives in order to prevent them reforging something new. like attackers क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हार्ड ड्राइव्स को उठा के कुछ गलत काम को यूज कर सकते हैं। उसको क्या करते हैं गूगल क्लाउड, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब मेल्ट कर देते हैं और कुछ अलग यूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। बस these are the data security principles. It is used in cloud, belong to business organization. Next, any questions? Any questions regarding Google Cloud Console? Like how to, or you have any doubts on how to organize or how to implement some services? You can ask questions on how to, like what is this service, what is that service. I can show you around. Yeah, So, okay. I can show you around these services if you have any questions right now. You can build projects on this, and it will be great idea. You can also implement AI in your projects also. It is free in Google Cloud. What certifications you have done and any personal experience you want to share? I have done around like 3 certifications or 4 certifications, like Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate and Multi-Cloud Architect Associate, and another one is Data Science Professional. I guess have done at free of cost. एंड एक्सपीरियंस मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। आई एम नॉट ए वर्किंग प्रोफेशनल राइट नाउ, आई एम ए स्टूडेंट अंडर ग्रेड। आपको कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए तो गूगल दे रहा है और AWS दे रहा है। बिगिनर फ्रेंडली AWS का सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर होता है, वो ले सकते हैं। मतलब इट कॉस्ट सम अमाउंट ऑफ अबाउट लाइक 25,000 और 18,000। Any questions, guys, So regarding if the you cloud have service? any questions, you can ask, or otherwise we have to end the webinar now. We have to end the session. If you have any questions, you can ask.